So what is basically an array? Array is a continuous memory allocation. Okay, like if I have an Excel file. Okay, I have an Excel file. So this is like a array. First element will come here, second here, third will come here, fourth element will come here, fifth element will come here. So you will have all the array continuous memory allocation. Okay. But if you want to access any value, so it has an index. So this index will be 0, this one, 2, 3. Okay. So we have a indexes available for each and every element in an array. So now we will see how we can create arrays. You can create a string array, you can create a number array. Let's take a array. I create an array, const class, string array. So this is the syntax to create an array. This is an bracket shows that this is an array. Now you can put any values in it. So I can put say first of all Safari. I can put Swift. Okay. I can put Model 3, Tesla. This is the array I have created. Fine. Now if I want to print the array, it is very simple. Printing an array is very simple. Why other guys are not joining? In the group, join fast. Now, now what I do, I go over here and I try to print the array. So this is my initial array. Okay, this is my initial array. So let me print with the commands. So I go over here and print console dot log. Okay, with the comments, comma, cars. Let's run it out. I go over here and give my command, say array. So it printed with that. Now, now if I want to add any element in an array at the end, so we have a command that is push. Push command is used to enter or add any value at the end of the array. So I go over here, task dot push I20. I push it. Now let me print the element after push console dot log and I print counts. Save it and run it. So it is showing me I20 error. Got it? Now if we want to remove a array, I want to remove a array from the end. Okay, so you can use pop. You can use pop for it. So I go here, const, remove car dot, right? So let me give a command console.log after pop
And let's print it out. Console dot log bar. Save it and let's run it. See, after pop, it has removed it. After push, added it, pop, removed it. Any question to you? Any question? Check it out. Any questions? So we have created an array. We are putting some operation on it. Push will add the element at the end of array, and pop will take out the element from the array, last element from it. Please everyone be on time. Okay. I have created an array. Okay. Array index always start with 0. I have pushed an element in an array and I am popping out the element from an array. Write it out. I will show you more functions. This is 9:30 version. Now, now suppose I want to add a element at the beginning of an array. Okay. I want to add a element at the beginning of an array. Now I want to say, now I'm making it some different. Let me add some countries in it. Okay. So I want to add an element at the beginning of the array. So we have a command known as unshift. We have a command known as unshift. So I go over here and write it down. Stars dot unshift. Let me need Brazil. Okay, I'm just setting up a tree. Let it be. So let's print it out after unshift what it do. Console dot log. Okay. After unshift, fine. Let's print out things. So let me run it out. See, it has added Brazil at the start. So unshift, what it will do, it will add an element in the beginning of an. Now if I want to remove the element from the beginning of the array, then we have a command known as shift command. So shift command removes the first element. So let shifted, I'm taking shifted country is equal to bar dot, okay, console dot log country which we have removed from shift. So give comma shifted country. And I want to check our complete array also. So how can I do? After shift. Okay, so I give here console dot log and I give after shift.
These are interview questions. Fine. What is the after shift? We give the countries. Cars. Okay. So now let's run it out. Now it is showing again my same Safari, Shift, and model. So it has removed Brazil from it because we give Shift. Now suppose I want to add or add, remove element. So I told you this is index 0, this is index 1, this is index 2. Okay. This is index 1, index 2, index 3. I give one more car say Maruti. And they are, so now we have something known as shift. Slice. Sorry. Shift we have already seen. We have something known as splice, SPLIC, which will add, remove item from anywhere in the app. I add and remove item from anywhere in the app. So I go over here, I give here country, car, car, dot, price. This is what I'm doing. Take the index 2. So index 2 is 0, 1, 2, model 3. So take the index 2 and put one element there. Put new element. So I give it as C score. Now let's see after shift. Did it replaced 0, 1 to model 3 to Safari or Wait? Okay. So I give here console dot log car. Save it and let's see. So see, Scorpio is now. Now if you give two elements, you have to specify two items over it. Try it at yourself. Three elements, you have to specify three elements. So this will remove, add and remove. It will add up element and remove the else. So this is splice. And one is thing is known as slice. Slice will take that element, but it will copy in a new variable. Okay. So I want 0, 1, 1 to 2. 1, 2 element I want and put it in a variable. So 6 is slice. Go over here. So I gave something say let uh, new card. Okay. Is equal to car dot slice. I give one. So 0, 1, 2, 3. It will take it. And I go here and print out console dot log new card. Okay. Save it and let's run it. So see, it take out, but fourth element will not come. Means this is a range. Take 1, 2. Don't take 3. This is its formula. Okay, it took 1 and if you want to take 3 also, then put 4. But it may be something say out of range. Let's check it out. It will take it out. So it take it out not. Okay. So this is the way you can take out rank. Another is concatenate. Another function is concatenate. What concatenation do? Concatenation will merge together two arrays. I go over here with concatenate. I create more cars. Let more cars. Okay. String is equal to I gave for Audi, comma, Safari. I gave more. And I go over here. What I do, I now merge them. So I create a new array, let merged. Merged array is equal to country cars dot concatenate with more cars. Okay. Now let's print out merged array. Console
dot log merge. Save it. Let's run it. See, it printed me Maruti till Maruti it was there. Audi and Safari is merged. Got it, everyone? Now I want to find index of say Spotlight. Sir, one this one was the doubt. Which one? Doubt was there. Yeah, We yeah, said yeah, that splice adds or removes items anywhere in the array, right? splice will add. Yes, it will add an element and remove a particular element. Okay, so in this we have added at the So second position, like model yes, 3. yes, yes. And Okay, remove the there one we have element. added. Okay, only one element we have to remove, then we have to give only one there, right? Yes, if you give two elements, then give comma two and give the two elements of it. Okay, that was the issue. Okay, I buddy. forgot the index and this. Thank you, sir. Okay, okay. Let I want to see the index of something. Say position is equal to car dot index of. I want to check the index of anything. So I go over here and give say uh, let's say Maruti and give console dot log position. Save it. Let's save it. See it is showing it is on the third position. 0, 1, 2, 3. It always tell about from index. You can reverse the array also. You can reverse the array also. So I can give car dot reverse. Okay. And now if you print it out, console dot log cars. Okay. Save it. Let's run it. See it printed me reverse. You can sort an array also. You can sort an array also. So countries, sorry, cars. Actually, I was working last class of the countries array. That's why it is coming in my mind. And that's why I did countries also in between. Sort, okay, console dot log cars. Save it. That's it. See, Safari, Scorpio, Maruti, Swift. So Swift is, see, S is capital, that's why it is coming first. Okay, got it? I also know. So these are the basic arrays functions. These are the array functions. Okay, there is one more function that is map related function. Okay, suppose I create a number array. Let say base number, colon, number is equal to say I create a 1, comma 3, 1, comma 2, comma 3, comma 3, comma 4. This number I have created, comma 5 also. Now what map will do? Map will take each and every element and perform some action on it. Map, see, don't confuse with other maps. Okay, I will teach you. This is a function in array. Okay, so I will take with a map with a loop and do it. So what I do, I create a variable that double numbers is equal to base number comma map. Okay, and you remember yesterday we did arrow functions. So I take num colon. See what I will tell you. Num into what it will do. It will take first number and it will multiply it. Okay, see, it will take out the first number and multiply it. Second number, multiply it. Third number, multiply it. And it will keep on putting it in double numbers. So if I print the original array, base number, and I print, say, our double array, so how it will be console dot log.
Okay, original array means base number. And if I print out our console dot log transformed array, okay, I take it out, go, fine. I go over here and comma double. Let's save it and try to run it. So see, it took out first, multiplied it, put it into second element, multiplied it, put it into third element, multiplied it, put it into fourth element. So this is the concept of map in L. Got it? Anyone, any questions asked? We have created 42 line code. All functions we have done, you will find in an interview these questions only. They will ask, what are all the, I just 2 days back, a student told me, sir, my first question was, he asked me, tell me all the functions which are in array. He gave the answer. You can delete element also. No, no, delete not. We have unpushed pop. We have used the pop element, delete element. Please, any questions? I am giving this program in the group. I have to ask individually. Vijay, Mani, any question? Priyanka B, Pooja, any questions? You all are intelligent. Okay. Now let's check the concept of map. So what is basically map? See, map is basically what we call is a key value pair. I have a roll number. My roll number is always number one. ABHINAB, that's why. So roll number one, name Abhinav, education engineering. Okay. For someone say roll number two, Ashish. Okay. Education MBA. So we have a key and value. So we have same thing in our maps. So we have to put with key and value. So let me create a program for map. See, I am giving the comments. Just see this. I am giving every comment. You can easily, because we don't have a concept of theory. If you want theory, I don't think we need a theory. Okay. So let me write it out. अच्छा, वैसे तो अपनी पूरी क्लास में हिंदी हिंदी वाले हैं, so that is not an issue. I can speak Hindi also. So if I go car inventory, so I create a new map. So map, I with the fingered map. So I take a key. Take a key string and I take its value, say number. Okay. I take key and value as number. Fine. I have created a key value. Now let's add the elements. So to add elements in a map, we use set command. What command we use? Set command. So I will be adding a model and I will be seeing how many stock is there. So I go into here and add a value, say car inventory dot set. I set the value, say Safari. And in stock, we say we have five. Safari is stock is five. Okay, so one element is added. Next, I take the model 3 of Tesla and make it as 3. And I take another as a Swift and total amount is 12. So we have three key values. Key Safari, its value is 5. Model 3, its value is 3. And Safari, its value is 12. Clear till now? Now I want to retrieve the value. Now I want to retrieve the value. To retrieve the value, we use get command.
So now if I want to see what is the amount we have in say Swift. So I go over here, const Swift stock. I create a variable Swift stock is equal to car inventory dot get and say Swift. Drag it. And let's print it out. How what is the stock of console dot log Swift stock. Save it and let's run it. Oh, it's different program. It is map. If you're running, it is showing me 12. Swift stock is 12. Now I want to check, do I incorrect value? Does item key is there? I want to check that does a particular key exist here on it. For that, we have a command known as has. So I give go here, const has I20. I check I20. Has I20 is equal to, so I give what is the car inventory dot has I20 again. And let's print it console dot log as I. Save it and let's run it. If you run it, it shows you false because it is not used. Guys, got it? Suppose I want to see the size, total size of elements here. So we have a function known as size. So we use size. I go over here and give console dot log and give the size. Simple. Car inventory dot size. Okay, go into it. Let's run it out. It is showing me 3. Now suppose I delete something. I remove an element. Model 3 I remove. Then size should become 2. Okay. So I go over here. How can I delete it? Car inventory dot delete. Okay. The model. Okay. And let's print it out. Console dot log car inventory dot. Got it? Let's run it. It should be 2. Got it? Any questions on maps? Any questions? अभिनव एक्चुअली मतलब ये आपने बताया कि मैप इज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर यू यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा That has इन key and value. हाँ की एंड वैल्यू पेयर्स Yes. तो आई मीन आई एम नॉट गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट मतलब हाउ वी आर यूजिंग इट ओके, कल को मेरे को डेटाबेस बनाना है ना, जिसमें की और वैल्यूज स्टोर करनी है। ओके, मेरे किसी प्रोग्राम के अंदर कि मेरा की आई की आईडी आया तो उसका नेम ये होना चाहिए। ओके, एज आई तो ये आना चाहिए। ओके, तो जैसे अपन एसक्यूएल में बनाते हैं ना पीछे में, उसी तरीके से अपने की और वैल्यू बनानी है और अपन डायरेक्टली सीधी की से बात करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे आपने लाइक इफ वी आर गोइंग इनटू थर्ड लाइन कांस्टेंट हमने लिया कार इन्वेंट्री द मैप is you have taken this or this is built in right map यस, मैप इज द that बिल्डिंग is a कीवर्ड, दिस इज द type of सिंटेक्स। string and number correct स्ट्रिंग इज द की and value is the number. So I have taken here, see, key is the string and ठीक है their value is number. Got it? okay so this is a number of inventory or like Yes. okay so अपना this is ये the है कि अगर address अपने of पास हाँ हाँ ऑडी हाँ है, कितनी है, स्टॉक बताओ उसका।
वो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ मैंने बता दिया सफारी है, उसका स्टॉक 5 है, मॉडल का स्टॉक 3 है, ये मैंने एग्जांपल लिया है। हाँ, ओके, नहीं दैट अपन ये इज ओके। ठीक है। ओके, नहीं ठीक नहीं, है। पूछो पूछो। अ, नहीं, आई थिंक ये थोड़ा देखना पड़ेगा स्टिल। नहीं, क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखो, अपनी बात भी हिंदी में भी हो रही है, तो अपन को समझ में तो अचानक से बाई चांस इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाए मेरी से तरफ से। नहीं, दैट इज ओके। सो हियर इट इज अ टाइप ऑफ की डेटा हम यहीं पे स्टोर कर रहे हैं, जो भी डेटा यस हम बात कर रहे यस। हैं, करेक्ट? हाँ सो मेरा डाउट ये है कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन रियल टाइम डेटा, हाँ, तो करेक्ट? उसमें क्या होगा, किसी फाइल में स्टोर करेंगे अपन, मान लो डेटा है ना, तो उससे ला करके अपन डायरेक्ट वैल्यू में डाल सकते हैं। मैंने एक्सेल में स्टोर कर लिया, पहले डेटा इसमें आ जाए, पहला ठीक डेटा है। ये आया, दूसरा डेटा ये आया, तीसरा हम्म। डेटा ये आया, रन टाइम। ओके, सिंस मेरा यही डाउट था कि अगर मैं रियल टाइम पे बात कर रही हूँ तो मेरे पास हम्म। अगर मतलब एक वेबसाइट है कोई, वहां पे तो 1000 नंबर्स ऑफ डेटा होगा, तो वो हाँ सारा कैसे पॉसिबल है यहाँ ऐड करना है इस तरीके से? हाँ, तो वो आप मानो एक्सेल में स्टोर कर सकते हो और उनको की वैल्यू में ले सकते ओके, हो। ओके, ठीक जेसन है। में भी स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करने के बहुत तरीके हैं। फाइंड डेटा, तो दीज आर वन ऑफ द वेज। ओके, दीज आर ठीक वन ऑफ है। द वेज जिसमें अपन स्टोर कर सकते हैं data। देखो, ठीक कभी भी है। अपन कहीं भी एरेज का बहुत कम यूज आएगा, पर ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अपन को स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। अपन तो क्या करेंगे, फाइल में ही स्टोर करेंगे डेटा सारा, और वहीं से मैं जेसन से रीड करूंगा। ठीक है, मतलब उस एक्सेल को आप यहाँ अटैच करोगे और उसका एड्रेस वहां पे हाँ देखो, देके मैं आपको उससे दिखाऊंगा, आप अटैच। एक सेकंड आप पूछो ना, मैं बताता हूँ ना आपको एक चीज और बताता हूँ। इससे ये क्वेश्चन तो आनी चाहिए। अब देखो, मैं इधर गया, अभी मैंने हम फ्रेमवर्क पर वर्क कर रहे थे। अब इसमें देखो मैंने क्या किया है, जेसन में किया है स्टोर। मैंने मैप का तो यूज लिया ही नहीं है कहीं, पर मैप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैंने यहाँ किया की क्या है मेरी, वैलिड यूजर, उसका डेटा ये। ओके, ये जेसन बना रही है, उसमें डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, डायरेक्ट डेटा। ओके। जेसन पे ही वर्क करते हैं ना अपन ज्यादातर अपनी उसमें पोस्टमैन वगैरह में भी हम्म। वहीं से डेटा लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने की बना दी और उसका वैल्यू डालता जा रहा हूँ। उसी तरीके से वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट है मैप में, की वैल्यू का। ये आपकी एक की है, ये और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। गॉट अच्छा, इट? यहाँ पे जो हम बिना की वैल्यू का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो सेलेनियम में हम मतलब यही सेम होता है या इसकी जगह कुछ और होता है? सेम सेम मैप, सिलेनियम नहीं, जावा की बात होगी, हाँ, जावा है ना। मतलब करेक्ट, जावा हाँ। और टाइपस्क्रिप्ट में सेम होता है, एरे, मैथ्स और सेट कॉन्सेप्ट सेम है, बस लिखने का ओके। तरीका अलग है। ओके, ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सेट का। सेट का क्या होता है, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं होते। एरे में आप क्या डुप्लीकेट एलिमेंट डाल सकते हैं, बट इट सेट यू कैन नॉट पुट एनी डुप्लीकेट एलिमेंट। तो ये डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए आपके सेट्स यूज में आते हैं। सो अब मैं अपन बनाते हैं नेक्स्ट, बनाते हैं सेट्स। ठीक है, कॉस्ट पैरा इक्वल टू न्यू सेट, स्ट्रिंग टाइप का बनाता हूँ मैं एक सेट। इसके अंदर वैल्यू देता हूँ मैं, मानो सफारी, कॉमा, स्विफ्ट। ओके, एक सेट बनाया, इसमें मैंने दो वैल्यू दी। फाइन, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया तुमने, दो एलिमेंट है। अब मैं मानो, अब यहाँ पे अगर एलिमेंट ऐड करते हैं तो वहां जैसे आपको सेट कमांड कहाँ आता है ना, यहाँ आता है add। अब मैं एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, गैराज डॉट ऐड
मॉडल 3, मॉडल 3। फिर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, है ना, एक चीज देख लो, क्या सेव करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बड़े बनते जाएंगे। मॉडल 3 आ गया। अब मैं वापस क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ मॉडल 3। मैं कह रहा हूँ डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आता, मैं वापस ऐड करता हूँ डुप्लीकेट एलिमेंट और प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये आ गया, इसको प्रिंट करते हैं। सो मेरे डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं हुआ, नहीं, सो वी कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इन। अगर मेरे को चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए यहाँ भी हैश कमांड यूज में आता है। तो मैं चेक करता हूँ, मानो कॉस्ट हैश हैश नो इज इक्वल टू गैरेज डॉट हैश मॉडल। यहाँ गया तो मैं प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग हैश तो टेस्ला है मेरे, है ना, मॉडल 3 है ये भाई। तो ये प्रिंट करेगा मेरे थ्रू। नहीं होगा तो फॉल्स भी आप करके देखो। इसकी साइज प्रिंट करानी है मेरे को, टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो कंसोल डॉट लॉग, ओके, गैरेज डॉट सेव करता हूँ सब। फिर मेरे को दिखाएगा 3 एलिमेंट है आपके पास। अब मेरे को एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो देखो मेरे, अब एरे की तरह इंडेक्स नंबर तो है नहीं, फॉर लूप नहीं चलेगा, वो वाला फॉर लूप नहीं चलेगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन। यहाँ क्या दूसरा फॉर ऑफ लूप काम आता है, ये मैंने अब तक बताया नहीं था क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था। अब हम अपन क्या करेंगे, फॉर ऑफ लूप यूज लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जाऊंगा मैं, समझना, मैं जाके लगाऊंगा फॉर कॉस्ट कार ऑफ गैरेज, और यहाँ के मैं बता रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट निकाल रहा है, ये क्या करता है, एक एक एलिमेंट निकाल रहा है। गैरेज क्या करेगा, कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है। सो ये फर्स्ट एलिमेंट निकाल के लाएगा, कार में डालेगा और प्रिंट करेगा। सेकंड एलिमेंट निकाल के लाएगा कंटेनर में से, फिर प्रिंट करेगा। थर्ड एलिमेंट निकाल के लाएगा, फिर प्रिंट करेगा, ऐसे चलेगा। So it will take out one element from garage, put it in car, and it will print it out. So let me run it. मुझे कुछ ना अलग अलग जा करके इन चीजों को प्रिंट कर, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द यूज ऑफ, जहां कंटेनर आ जाए, दिस सेट इज अ कंटेनर। अब आप में इंडेक्स तो होता नहीं है, जहां इंडेक्स ना हो कंटेनर आ जाए, तो वहां अपन यूज करते हैं फॉर ऑफ। ओके, और मेरे को मानो इसको मैप को क्लियर कर देना है, अगर मेरे को सारे एलिमेंट डिलीट कर देने हैं, तो गैरेज डॉट क्लियर, ओके, में जाओ और अपन साइज प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग गैरेज डॉट, अगर सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, और ये मेरे को जीरो साइज प्रिंट। इसको क्या समझ में नहीं आया, प्लीज आस्क मी। अभिनव, ये फोर्थ लाइन में आपने मॉडल 3 ऐड किया था, करेक्ट? क्या? फोर्थ लाइन में हम्म आपने ऐड किया एक एलिमेंट मॉडल 3, हम्म है ना? हम्म देन हम्म फिफ्थ में आपने उसको प्रिंट कराया, देन सिक्स में हम चेक कर रहे थे कि ये डुप्लीकेट, मतलब चेक करने के लिए एलिमेंट, करेक्ट। हाँ हाँ। बट आई हैव एन डाउट कि नीचे कंसोल में हमें एरर तो नहीं मिला कि ये नहीं मतलब नहीं, वो ऐड ही नहीं करेगा, एरर नहीं आएगा, वो ऐड नहीं करेगा, देखो अपने प्रिंट कराया ना, उसने ऐड ही नहीं किया, पहले भी इतना ही था, इतना ही था, एलिमेंट बढ़ेंगे नहीं, एरर नहीं आता इसमें, ऐड नहीं करेगा। ओके, सफारी स्विफ्ट, अच्छा ओके, ठीक है। है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इट विल नॉट ऐड द डुप्लीकेट। अगर मानो कोई डुप्लीकेट ऐड करा भी जाए बेचारा गलती से, एरर आ जाए और प्रोग्राम में इशू आ जाए, ओके, तो इसमें एरर नहीं आता, इट विल नॉट ऐड, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये जो आपने नीचे लूप बताया है, इसमें हमें उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लाइक काउंटिंग
कि कहाँ पे अब इसको सब स्टॉप होना काउंट, है आपके या अपने पास कुछ है, काउंट तो होता नहीं ये है, इसमें अपने आप। इंडेक्स तो होता नहीं है, इंडेक्स है ओके, नहीं। ये तो ये क्या, गैरेज को एक तरह का कंटेनर बनाएगा सेट को, और उससे एक एक एलिमेंट हम्म, निकाल सके। ठीक है। हम्म, मैं एरे करा दिया, मैप करा दिया, सेट्स करा दिया, ये तीनों हैवी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यही करो आज। ओके, ठीक है। एनीथिंग मोर यू वांट टू डू? क्योंकि एरे में 12 फंक्शन थे, उसमें 4 फंक्शन थे, 20 एक फंक्शन हो गए हैं अपने। ओके, सो आई वांट यू टू डू इट टुडे, टुमारो, देन वी विल सी नेक्स्ट थिंग्स, वी विल कम विद oops concept tomorrow. Okay, अच्छा, तो आपने वो बताया अभी कि एरे में हम ये वाला लूप यूज करते हैं, करेक्ट? का फॉर इंट मतलब, आई इक्वल टू 0 करके कर दो आप वहां पे लूप, तो बंद करके है ना। मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो जो लूप होता है, क्या वो यहाँ पे मतलब यूज होता है ऐसा नहीं रियल होगा, टाइम नहीं में? होगा, नहीं होगा, यहाँ ओके, इंडेक्स ही नहीं है। हाँ, दैट्स द रीजन। ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है विजय लक्ष्मी, समझ में आ रहा है? जी सर, समझ आ रहा है सर। चलो, प्रियंका राजपूत एंड प्रियंका भी, आप दोनों को। यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, मैं चाहूँ तो आगे कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि फिर अपन अब ऊप्स का कॉन्सेप्ट कर ले, चालू करें, हम्म। है ना? क्योंकि ये तीन तीन एक दिन में बहुत होते हैं ये एरे, वी आर हैविंग अराउंड से। सर ये हम मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूंगी घर पे, लेकिन हम कल उप्स के कंसेप्ट चालू करने से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि क्या क्या होता है इससे वाला, कल एक बार क्या रिवाइज, पूछो तो सही। यही सेम एक बार या प्रैक्टिस कुछ करके दो, नहीं क्वेश्चंस। समझ में नहीं आया तो अपन उसको डिस्कस करेंगे ना, ओके, चलेगा सर, कुछ है प्रॉब्लम ना? नहीं। जो समझ में नहीं आया वो डिस्कस कर लेंगे, वापस पढ़ने का क्या जो यूज है? आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे से पूछो, मैं वीडियो दे दूंगा आप लोगों को। ओके, ओके सर। एक एक बार ओके। देखना, पॉइंट्स बना लेना, दोबारा बनाने का कोई ओके। यूज समझ में नहीं आ रहा ना, हाँ हाँ सर, चलिए। है ना?